what is polar modulus? अब यहाँ polar moment of inertia था. What is polar modulus? So we have this equation T upon J is equals to tau upon R is equals to G theta upon L. तो अगर इसका हम ये वाला पार्ट देखें T upon J is equals to tau upon R. So T is equals to tau into J divided by R is equals to J by R will be the ZP. ZP is the polar modulus. जैसे हमने पीछे देखा सेक्शन मॉडुलस था, ऐसी ही ये है पोलर मॉडुलस. ठीक है. तो जैसे वहां पर I अपॉन वाई मैक्स कर देते थे तो वो बन जाता था आपका सेक्शन मॉडुलस. यहाँ पर जब J is the polar moment of inertia when it is divided by R, so it becomes ZP is the polar modulus. So where tau is the maximum shear stress occurring at surface and R is the extreme fiber distance from the center. इसमें भी यही एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर 0 से लेके बाहर तक रेडिएट कर रही है फाइबर्स. ठीक है. ऐसे करते करते जो बाहर रेड वाली सरफेस है इस पर जो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम O इट इज कैपिटल R and it is the distance of the extreme fiber from the center of the shaft. So thus polar modulus is the ratio of polar moment of inertia to extreme radial distance of the fiber from the center and its unit is meter cube. ठीक है.